हेलो 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 हेलो। ओके। सब कुछ साउंड सही है गेम का, मेरी आवाज़ सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके चलो बढ़िया है फिर तो। भाई लैग ना हो, ठीक है, क्योंकि गेम बहुत हैवी है एंड चलो देखते हैं। मैंने वैसे गेम खेल लिया है, ठीक है, मतलब काफ़ी काफ़ी मैंने खेल लिया है। मेन क्वेस्ट मैंने अभी तक, क्या बोलते हैं, इनिशियली मैंने कर लिया है, ठीक है, मतलब क्या होता है ना, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वगैरह ये वो थोड़ा बहुत कर लिया है। तो तुम लोग को थोड़ा हेड्स अप चाहिए स्टोरी में तो बता दो, मैं बता दूंगा, क्योंकि मतलब इनिशियली को ऐसा कुछ खास नहीं है। स्टोरी स्टोरी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट, स्टोरी बेसिकली बताते हैं ये लोग। एंड करने लायक कुछ ऐसा है नहीं, मतलब करने लायक ऐसे नॉर्मल स्टोरी के उसमें जैसे प्रोग्रेस होता है वैसा ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अनलॉक करने पड़ेंगे तुमको, जैसे कि वॉन्ड अनलॉक किया मैंने अभी थोड़ा देर पहले अपना, एंड रोब्स वगैरह ये सब अनलॉक करना पड़ता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अभी तक झाड़ू खुला नहीं है, ठीक है, तो उड़ने वाला झाड़ू अभी तक खुला नहीं है, माउंट अभी तक खुला नहीं, तो बहुत कुछ अभी बाकी है खोलना। तो इनिशियली इसीलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ इनिशियली, कि भाई दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। और अपने पास महंगा वाला एडिशन है, ठीक है, एकदम मेरे पास महंगा वाला एडिशन है, तो इसीलिए अपने पास ये बड़े लोगों वाली चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है। यस। नहीं तो नहीं तो नॉर्मल में ये वाला आता है, ठीक है, नॉर्मली ये वाला आता है रूप, लेकिन अपने पास महंगा वाला एडिशन है। कैसा है भाई? अरे तेरी नाइस। नहीं। ओह डैम नाइस, ये भी अच्छा है भाई, लेकिन सुपरमैन नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं तो मैं ये यूज़ करूँगा बस, नथिंग मोर नथिंग लेस। और अपने पास डंडे के नाम पे ये है एल्डर वॉन्ड विथ फिनिक्स फेदर। ओके चलो, तो मैं बता देता हूँ स्टोरी में होता क्या है। स्टोरी में ये अपना मेन कैरेक्टर है, ये मेन कैरेक्टर जो है ना, ये 5th ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया है, ठीक है। अब ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि नॉर्मली हॉगवर्ट्स में क्या होता है, जैसे हैरी पॉटर गया था फर्स्ट ईयर से, बच्चा जब था तब गया था ना, तो वो फर्स्ट ईयर में गया था, ठीक है। लोग नॉर्मली फर्स्ट ईयर में जाते हैं, थर्ड ईयर सेकंड ईयर में जाते हैं, 5th ईयर में बहुत कम जन जाते हैं। 5th ईयर बेसिकली एंड के लास्ट 3 ईयर्स में से एक है, 5th 6th 7, ठीक है, ऐसा टाइप। तो बहुत कम जन जाते हैं, और 5th ईयर में लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि ऑब्वियसली भाई इतने पहले इतने बाद में जाएगा तो कहाँ से पढ़ेगा आदमी, है ना। तो या वो एक रीज़न है। और स्टोरी ये है कि ये जो बंदा अपना ये 5th ईयर में हॉगवर्ट्स आया है, इसके साथ एक फिग प्रोफेसर फिग बोल के एक बंदा है, वो प्रोफेसर है हॉगवर्ट्स का, उसको लेके आ रहा था, और एक मिनिस्ट्री का बंदा था उसको, वो भी आ रहा था। तो इस गेम का जो विलन है, मेन विलन है, उसने प्लॉट करके ड्रैगन छोड़ के मार दिया। ओके, तो जो मिनिस्ट्री का बंदा था वो तो मर गया, प्रोफेसर और ये बच्चा बच गया, और ये लोग बच गए। एंड एक सीक्रेट चाबी थी, उसको उसके साथ ये लोग हेल्प करके, इफ यू हैव सीन द मूवी हैरी पॉटर वाली मूवीज, जो ग्रीन गॉड्स बैंक नहीं रहता, विजर्डिंग बैंक जहाँ पे गॉब्लिन्स रहते हैं, वहाँ जाते हैं। एंड देन वहाँ पे एक लॉकर खोलते हैं जिसमें इनको एक मेमोरी दिखती है। तो उस मेमोरी में बेसिकली एंशियंट मैजिक के बारे में ये लोग बोलते हैं, और ये अपना जो मेन कैरेक्टर है ये एंशियंट मैजिक सेंस कर सकता है, तो ही इज़ वन ऑफ देम, मतलब वन ऑफ द एंशियंट मैजिक विल्डर्स, ठीक है। तो स्टोरी इसी के अराउंड है। और जो मेन विलन है ये गॉब्लिन है, अभी तक तो यही पता चला है कि मेन विलन जो है एक गॉब्लिन है, जो बहुत पावरफुल है, बेसिकली लाइक वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडलवॉल्ड, पता नहीं, देखते हैं अभी। मेन ऑब्जेक्टिव उसका पता नहीं है मेरे को,
अभी पता चलेगा। कितना तक स्टोरी हेड्स अप हुआ है? Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident. अपने को क्लासेस करनी है, स्पेल्स अनलॉक करने हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या है। चलो। Do you remember me अर्चित? Yes 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 yes। लास्ट ईयर में जाके टॉप करेगा। हाँ भाई एकदम एकदम। Hi 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 hello 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 yes. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. Hello bhai। You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. बड़े लोग। Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. तो स्टोरी मोड गेम है भाई। Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. क्या बना रहा है ये? आई थिंक हीलिंग पोशन बना रहा है ये। अरे मुझे येलन भी मिल गई। नाइस नाइस नाइस। अबे गेंशिन की बात नहीं करेंगे, ठीक है? मेरे को गेंशिन से बाहर निकलना है। मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है? मैंने पैसे दिए इस गेम को। मेरे को खेलने दो। क्या बनाया ये? Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. गेम है? जो बेस एडिशन है वो 3000 का है, 2999 का। और ये वाला जो एडिशन है डिलक्स वाला डार्क आर्ट्स के साथ जो आता है वो 35 का है। करना क्या वैसे? Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? पैसा दिया है गेम को, मैं खेलेगा। हाँ भाई वही तो। आर्ट कलेक्टली। Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. Goodbye, okay. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Okay, एक side quest मिल गया, cool. करना क्या है इसे? Collect. Revelio. Okay, दिख गया. Remember,
ओए तेरी ठीक है Bodgingen Brooks okay Revelio. Protego. Lumos. Your potion stations organized. ठीक है भाई Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! लगाओ Thank गेम you. में This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your हिंदी endurance वॉइस potion, लगाएंगे and I'll tell you when या this फिर लगाएगा concoction's finished. वो कौन सा भाई स्पेल है पितृदेव संग्रह व्हाटएवर वो करेगा भाई वो सब करना नहीं है मेरे को कुछ भी भाई हिंदी में लगाओ बोलता है ओके क्या करना है यहाँ पे बनाना क्या है ब्रू ये वाला बनाना है cool। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है तो बहुत इजी है चलो इसमें पॉटर भाई जब हैरी पॉटर मैं बताता हूँ ये कितना पुराना है ठीक है ये 18th सेंचुरी में बेस्ड है सो उस हिसाब से ये हैरी पॉटर से 200 साल के पहले का बात है तो अभी बेसिकली 200 नहीं ऑलमोस्ट 100 के ऊपर मतलब ये गेम खत्म होते होते मतलब इसके एंड तक मे बी फर्स्ट ईयर में डम्बलडोर आएगा पढ़ने के लिए डम्बलडोर पढ़ने के लिए आएगा फर्स्ट ईयर में मतलब 10-11 साल का ऐसा कुछ समझ रहे हो तो मतलब इतनी पुराने टाइम का गेम है मतलब उस टाइम पीरियड में बेस्ड है इस गेम की स्टोरी तो अभी डम्बलडोर भी नहीं है इस गेम पे ठीक है और डम्बलडोर जब बुढ़ा हो गया था 100 के ऊपर का तब हैरी पॉटर स्कूल में आया था समझ रहे हो तो अभी तो भाई अभी तो पुराना है भाई अभी तो ग्रिंडलवाल्ड भी नहीं है भाई इसमें वोल्डेमॉर्ट तो दूर की बात And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! My weak and well potion's utter rubbish. Oh, the smell! Professor Shark must have learned a lot doing this. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? भाई मैंने ब्रू तो किया Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. Oh, yeah. His accomplice will answer to me as well. I brewed an endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. कर दिया भाई पिन मेरे को बाहर जाना है भाई यहाँ से I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. हो गया डीएम निकलते हैं अब निकलते कहाँ से Revelio.
The girl from युगांडू. ओके चलो, रुको युगांडू दिखा. कूल. अरे बहुत दूर है तो बहुत दूर है भाई. कैसे जाऊं मैं इतना दूर? चलो तुम लोग को हॉगवर्ट्स का बाहर दिखाते हैं कैसा है. लेट्स गो. I always feel don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. अरे दरवाजा बंद हो गया. You can't imagine how it Revelio. अपग्रेड हो गया. नाइस वेरी कूल. अभी करेगा वो, रुक जाओ. रिजाइन कर दिया है. नाइट बॉट मैंने ऑफ कर दिया भाई. क्या करेगा नाइट बॉट? बहुत ग्लिच करता है साला. नेवर माइंड. व्हाट इवेंट? व्हाट द फक? ऑलराइट, नेवर माइंड. Incendio. Oh, cool. They really shouldn't allow food. देख रहे हो क्या मस्त है ना हॉगवर्ट्स का कासल. जाना कहाँ है वैसे? इस तरफ जाना है क्या? भाई बहुत दूर है यार ये तो. ये हैग्रिड का घर है क्या? आई बिलीव यही हैग्रिड का घर है. यस यही है. यही होगा. यही होना चाहिए. यही है क्या? यही रहता था क्या? I've always said that travel broadens the mind. बीस्ट क्लासरूम. हाँ भाई, हाँ वो तो यही कराता था ना, शिक्षा देता था इसी की. बीस्ट क्लासरूम की. नाइस वेरी कूल. जाना कहाँ है? भाई कितना घूमना है? बहुत दूर है भाई. चोद जाना कहाँ है भाई? ठीक है, जैसे जैसे फॉलो कराएगा. क्या होता है? बोलना है तो बोलो. आग लगा दो पता चल जाएगा. हैरी पॉटर. नहीं भाई, हैरी पॉटर तो अभी पैदा भी नहीं हुआ भाई. उसका बाप भी पैदा नहीं हुआ अभी तो हैरी पॉटर का. हैरी पॉटर कहाँ से आएगा? उसका दादाजी टाइप का. ओके मूनशाइन, पता नहीं कुछ तो है. अपने को क्या है भाई? देख रहे हो भाई? ओह डैम नाइस हॉगवर्ट्स. आई थिंक यहाँ पे कुछ है. क्या है ये? उल्लू. कूल. भाई अभी तक खुला क्यों नहीं है भाई? मेरे को ब्रूम चाहिए अपना. भाई ओ माय गॉड, गिर जाएगा मेरा चोप.
आई थिंक इसी वाले पे ब्रूम देगा, पता नहीं, देखते हैं। आई थिंक देगा क्योंकि इसके जिसके पास जा रहे हैं उसने बोला था कि वो ब्रूम फ्लाइंग में एक्सपर्ट है, मे बी। आई थिंक भाई मैं टीपी कर सकता था भाई, बिन मतलब का चोट फैला के रखा था मैंने, टीपी कर लेता आराम से। ये वाला ब्रिज याद है किसी को? अरे मरा नहीं, इनविंसिबल है क्या भाई? मरा कैसे नहीं? कूल चलो। हेलो ब्रो, कैसे हो आप? मैं बहुत भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, नाइस, कूल। इलेक्ट्रोपेट्रोनम, हिंदी मंत्र, हिंदी मंत्र भाई। क्या दौड़ रहा है भाई? क्या बंदा दौड़ रहा है, देखो ना इतना स्पीड। अपना ट्रैवलर भी दौड़ता है इतना तो रहने दो यार, देखते हैं अभी कुछ तो अनलॉक होने वाला है। आई थिंक यहाँ पे रहता था क्या भाई? मैं कंफ्यूज्ड हूँ भाई, कहाँ रहता था साला। लेट्स सी, आई थिंक यहाँ पे रहता था, पता नहीं। Revelio. तुम लोग ही बोलो भाई, कहाँ रहता था? आई थिंक यहाँ रहता था। यस, मे बी यहाँ रहता था भाई, क्योंकि जहां पे रहता था उसी के पास में ही ये जंगल था। लेकिन साला हैरी लोग इतना दूर आता था चल चल के हैग्रिड के पास भाई। डैम भाई, इतना एनर्जी है, वो भी रात को। This could prove dangerous if I'm not careful. ओके कूल, या कुछ तो है, बाद में आएंगे यहाँ पे। अभी 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 फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, क्वेस्ट करना है। चलो, क्या मतलब स्टैमिना है? हाँ भाई जादूगर है भाई, एकदम स्टैमिना ही स्टैमिना है इसके पास। दीदी के पास आ गए। Good to see you, my friend. नाटक नहीं, चुप। Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. Okay. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts हाँ भाई, मैं भी student वही so करता। tricky. कंबल ओढ़ के सो जाता साला, तो रात को कौन You जाता were है? clearly in danger. For now, it is मेरा safe तो to गांड say फट that जाता। Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. लेकिन इसमें हम लोग डार्क मैजिक कर सकते हैं, क्योंकि all the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. लेकिन डार्क That may अरीना be है मेरे true, पास, but shouldn't Officer Singer handle डार्क someone आर्ट्स like वाला Harlow? अरीना। I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of उड़ने वाला Rookwood's झाड़ू lot भाई talking अभी about तक a अनलॉक नहीं massive हुआ है poaching यार। operation that Harlow is planning.
I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. लेकिन करना क्या है? I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? बस बात करना था. Trail of Merlin. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. They must have come this way. Think! Okay. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Students, you can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Now you've done it. Trying to make you quite working in. ठीक है. Dark Wizard. I'll watch the light go out of your eyes. ऐसे कैसे bench? We can hold them off. Going up. You'll take this student over my... Tell Rookwood to find me himself. Proper fable, they. Back for more. I knew you would feel hanging. Levioso. Accio. Incendio. हो गया. जिंदा है मुसली के. जिंदा कैसे तू? Cool. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small Harry part Potter. to Oh, your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Who is Priya? अब मेरे को पता है बोलेगे Priya is my wife वगैरह. I know that for a reason. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. पता था. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a traveling vendor. Buddhi's Here's what's lesbian. going on in the Highlands before I do. Priya my darling. हाँ भाई. Chilgad. Chilgad. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. अरे यार Historian- करो भाई. सुनना ही नहीं है तेरे को. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. हाँ हाँ ठीक है. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Nice, cool, very cool. How fascinating seems to be. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue.
I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little हाँ भाई hypothesis. स्लिदरिन गोट है भाई गोट. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Okay. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Pillar कहाँ है बे? Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. करना क्या है? Revelio. Okay, never mind. अबे उड़ा दिया चूतिया तो. मेरे को लगा रखेगा भाई. What should I do now? This is uncharted territory. Incendio. The flames make the pyre sink. टेलीपोर्ट था क्या? नहीं टेलीपोर्ट तो नहीं है. टेलीपोर्ट तो दूसरा है भाई. ये कुछ वो है क्या बोलते हैं? वर्ल्ड क्वेस्ट नहीं. अरे वो नहीं होता रे. चैलेंज. वर्ल्ड चैलेंज वगैरह. Speak to Nora Fateh. Nora Treadwell. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. कौन सा हाउस है? नागशक्ति ले लिया already मैंने. Not precisely. नागशक्ति. Well, I think each has those telltale vines and the swirl ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. Yes. My guess is अरे that नहीं each उतना will आगे नहीं also जितना require थे ना Mallowsweet, उतना ही है. which वो you जो can find in प्रिया वाली थी Hogsmeade, ना. should you need more. वो जो खेल रहे थे. I प्रिया really की must be बेगम. such वहीं a तक pleasure to meet you. कहाँ ज्यादा आगे भाई. And do be careful out here. मेरे को तो Now, झाड़ू I've खोलना है. got झाड़ू what I खुला कि needed नहीं खुला and I भाई? shall ये बताओ return मेरे to को. the safety of my झाड़ू notes खोल के and बंद कर दूंगा मैं. Revelio. खुला झाड़ू खुला? नहीं खुला? भाई दिक्कत है भाई. झाड़ू ही नहीं खुल रहा साला. ये क्या है? एक सेक. व्हाट? क्या खुला भाई? अभी ये क्या है? पिंक. अरे स्किन है भाई. नाइस. लगा लेंगे. उसमें क्या है? अच्छा दिख रहा है. खराब नहीं दिख रहा है. लुक्स गुड ओनली. हैंडल है भाई. हैंडल. वॉन्ट का हैंडल. यूज करे कि नहीं करे बताओ गाइस. मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है यार. प्लेन नॉर्मल. कहाँ से डाउनलोड किया? स्टीम से किया भाई. स्टीम से. क्या कब मिलेगा देखना पड़ेगा. डार्क फर्स्ट गया था? नहीं गया अभी तक. जाऊंगा मैं बाद में. भाई फ्लाइंग माउंट भी अभी तक अनलॉक नहीं है भाई. क्या है यार. अरे माय गॉड. बस्ता उड़ लेंगे और नहीं यार. ठीक है हैंडल लगा लेंगे.
ठीक है, ये भी खराब नहीं है। चलो ठीक है। इन्वेंट्री में क्या है? लॉन्च कब हुआ था? ये 10 तारीख को लॉन्च हुआ है भाई, फरवरी 10 तारीख को, इसी फरवरी 10 तारीख को। ये तो बहुत सही दिख रहा है भाई। डिफीट 10 डार्क विजर्ड्स है ना, चलो डिफीट करते हैं। चलो ये चाहिए मेरे को, क्लोक चाहिए, लगाऊंगा नहीं बट चाहिए। Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you, and you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone. Revelio. Especially Professor Blake. ओके, थंबनेल वाला बर्ड कहाँ है? अरे वो मिलेगा रे, वो भी मिलेगा, वो तो फ्री में मिलता है सबको, ठीक है। मतलब माउंट जब अनलॉक होगा ना, आई थिंक थ्रेशल माउंट भी वही है, क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक वो भी वो माउंट है कि स्किन है पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है भाई, ठीक है। वो मिलेगा, बाद में मिलेगा। हमारा तो बैडएस वाला माउंट है। हाँ हमारा तो है अभी, लेकिन माउंट अनलॉक होगा तब ना भाई, माउंट ही अनलॉक नहीं हो रहा है। बैडएस तो है वैसे, पैसा तो सब मिलेगा भाई, बैडएस, नाइस एस, सब एवरीथिंग। ये कि मोबाइल में भी आना चाहिए। हाँ भाई, मोबाइल ना जल के कोयला बन जाएगा भाई, ठीक है। ओ भाई, सब रिसोर्सेस एक ही दिन में दे देंगे तो रोज गेम कौन खेलेगा? अरे मतलब रिसोर्सेस थोड़ी है भाई, कोमोडिटी है भाई वो तो, रिसोर्सेस थोड़ी है। रिसोर्सेस तो ले लेंगे यार, कलेक्टर्स आइटम सब खोज खोज के, लेकिन एटलीस्ट झाड़ू तो देना चाहिए भाई। झाड़ू तो पहला दिन में देना चाहिए, कम से कम आदमी उड़े तो। इन लोग उड़ने ही नहीं दे रहा भाई। प्रणाम एवरीबॉडी। हाँ वही ना, ये का है, आई थिंक ये अलाउमोरा से चलेगा, विंगार्डियम लेवियोसा से चलेगा। हाँ इसको विंगार्डियम लेवियोसा यूज करना पड़ेगा इसके ऊपर, इसको उठा उठा के कहीं और ले जाना पड़ेगा। जैसे कि ये ओनली लेवियोसो है जो कॉम्बैट में यूज होता है खाली, तो थोड़ा दिक्कत है। अभी लॉक करना पड़ेगा भाई, देख रहे हो ये रहा, ये विंगार्डियम लेवियोसा, इसको यूज करना पड़ेगा। इसको रख देंगे जब आएगा तो, अभी तो टाइम है इसमें। और ये रहा देखो, ये अनलॉक करेंगे बाद में। ये मस्त, ये 3 तो डार्क स्पेल है इसमें। डैम नाइस। वीडियो, और ये कॉम्बैट वाले हैं। ये क्या है भाई? एक थीरी घुमा दिया भाई, नेवर माइंड। चलो इनके लिए क्लासेस करने पड़ते हैं भाई। अच्छा तो इसके पास वो बुक का पेज वगैरह है आई थिंक, जो बुक हमने लिया था ना लाइब्रेरी से, उसका पेज है इस गॉब्लिन के पास, चूतिया के पास। जाना पड़ेगा इसके पास मिलने।
Revelio. आ गए हैं. Off on another adventure, are we? मिल गया. Oh damn. Accio. Almost dead. The pumpkins just. Pumpkins? Ah, I think I know just the place. Oh, अरे कूदना भूसली के. वैलेंटाइंस डे का बाद दिखा ही नहीं तुम यार, क्यों ऐसा? कौन व्हाट? स्वीटी. ओ ऐसा मैं तभी सोचूं भाई, तभी सोचूं. 25 लेवल बस लास्ट 1228 पर आएगा. हाँ तो ठीक है, देखते हैं अभी धीरे धीरे करके अनलॉक कर लेंगे. क्या है इसमें? Revelio. दिख गया. अच्छा ये खुल गया? नहीं ये तो खुला ही है. एक सेकंड. हाँ ये तो खुला ही था भाई, ये तो खुला ही था. Okay. Down to the water's edge. This had better not be a trick. चलो हो गया. एक टैलेंट कॉम्बो साथ रखना हो तो हाँ सब रखेंगे. एक सेकंड. मेरा खुले तो पहले झाड़ू कब खुलेगा ये बताओ पहले तो. मेरे को वो जानना है. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Okay. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. I see. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. Level 10, 12 quest है, main story करते रहना. Oh, okay. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver.
Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Cool. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. चलो ये तो हो गया. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages and the ring. What was it you needed me to do, Scrope? Scrope would never presume to need anything from a student. Scrope simply thought that you might find the pages you seek in Apollonia's grotto. And that if you were to go there, you might also... It seems... Take this toast. Good luck. Okay, ये तो हो गया. जाना कहाँ भाई? चलो. Revelio. Incendio. मिला कि नहीं मिला? मैं बाहर आ क्यों बेकार में फिर? The fuck? हाँ भाई, हाँ भाई. I think इसको फेल सकता है. अरे हीलिंग नहीं है भाई मेरे पास. निकलो यहाँ से. कहाँ भेज दिया भाई मेरे को ये लोग आराम से. रॉन्ग होती तो माफ कर दो. केमन अच्छे, केमन व्हाट अच्छे. हीलिंग में नहीं है भाई. लेवल 10 के साथ मार. कितना बुद्धू बंदा है भाई. चुप. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई. कंट्रोलर में बहुत इजी है भाई. कीबोर्ड माउस से तो आवाज चल जाती है. मारे क्या? मार दे. भागो यहाँ से मैं चोर. भाई जाना ही है क्या यहाँ पे? नहीं जाने से नहीं होगा क्या यार? डॉज कर भाई. जोंगली नहीं लिया है यहाँ पे. ओ भाई लेंगे भाई. कि मैं अलग सलमान बनूंगा. सही बोलता है भाई. डॉज ही करना पड़ेगा भाई. लेकिन 3-3 4-4 है. Lumos. साला क्या प्रोटेगो स्पेल है भाई. कुछ काम का नहीं है. मैं क्यों
वहाँ जाने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? घूम के जाऊँ क्या? घूम के जाता हूँ। हाँ भाई, यस, दिस इज द वे टू गो। घूम के जाएंगे हम। Protego! Lumos! अरे अरे अरे, काट तोड़ दे रहा है भाई। Giant squid बना हुआ है यहाँ पे। Damn. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. फूटाओ मिल गई, नाइस, वेरी कूल। गेंशिन की बातें मत करो अभी, अपन गेम खेल रहा है। ओके, नाइस। गेम आ गया भाई। Could it be a visitor? What? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, what the fuck? 'Twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Lightheaded? If you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. ठीक है, टॉम रिडल भाई पैदा नहीं हुआ। टॉम रिडल अभी डम्बलडोर ही है, छोटा छोटा होगा मे बी। How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Okay. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. नाइस। लेकिन ये है क्या? ये तो लूमोस है। लूमोस से कैंडल जलाना है। फॉरेस्ट ब्रिज, पता नहीं कुछ तो है। A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. चलो चलते हैं भाई।
ये क्या कर रहा है? रिटर्न टू स्कोप। मैं इस रास्ते से तो नहीं जाऊंगा भाई, इस रास्ते से तो मैं जाऊंगा नहीं। ये लोग कोई बात नहीं, यहीं से जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं फिर। Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. 14 क्या होता है? The toast was the key. झाड़ू कब आएगा? I met a ghost there, Richard Jackdaw. iPhone 13 लो या 14 लो? Me to the pages I've been looking 14 for. लेना भाई। That boy was never good enough for 14 Pro ले ले भाई, ठीक है? What of the Black तो Family? अगर लाइक I'm तेरे sorry को to say लेना ही that है तो 14 Jackdaw Pro sold लेना है तो it 13 14 Pro Sad में से news कोई भी ले, 13 indeed. ले ले सस्ते में। Scrub shall need to think of another way to impress the इतना ज़्यादा headmaster. कुछ है नहीं। 14 Scrub Pro takes some है भाई, consolation माल in पीस। knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. I think और थोड़ी देर में मिल जाएगा, और थोड़ी देर में मिल जाएगा भाई, और थोड़ी देर में। ओके Leviosa. ओह ये नहीं हो रहा है। लेट्स Accio. Leviosa. मैजिक इज नॉट मोर पावरफुल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Before I can, I need to learn. ओके वरना पढ़ना पड़ेगा। कूल, पढ़ लेंगे। क्लास करने बोल रहा है भाई। लेवियोसो, हाँ लेवियोसो अलग है और विंगार्डियम लेवियोसा दोनों अलग है। विंगार्डियम लेवियोसा क्या, उसमें क्या होता है कि तुम अगर कास्ट करेगा ना तो यू कैन लेविटेट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर इंसान को, देन मूवमेंट करा सकता है, मतलब एक एक जगह से दूसरी जगह करा सकता है। लेवियोसो में खाली लेविटेट होता है और कुछ नहीं होता है, एक ही जगह में Handy लेविटेट होता है। resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. तो वही डिफरेंस है भाई। ओके लेकिन सीखना कैसे है? अभी रात को आई थिंक कुछ नहीं होगा। ये काम करते हैं। करते हैं। कास्ट ऑन एनिमीज, इतना अवॉइड एनिमी अटैक बाय डॉजिंग रोलिंग। ओके ये कहाँ से खोजूं मैं अब? क्या बवासी रही है? और कहाँ से खोजूं मैं अब? एनिमीज कहाँ से खोजूं?
क्या यार फॉरबिडन फॉरेस्ट में ही देखते हैं चलो। Lumos. मुझे दिख गया, एक एनिमी दिख गया मेरे को, लेकिन ये वही क्रोकोडाइल होगा। नाइस। आजा आजा आजा, कम यार बीच। ये तो हो गया। रोलिंग ओवर। अच्छा, आग जलाने वाला स्पेल मेरे को 5 बार करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्पाइडर होगा एक तो, आई बिलीव। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारे गान मार लेगा भाई लोग। आजा आजा आजा। Incendio. Accio. Levioso. Accio. अरे Incendio. Potato. Lumos. दो बार हुआ। अरे जंप कर छोटू तो। यहाँ पे और एक होगा। You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. I should warn you, I won't make the same mistakes my colleagues have made. Incendio. ओ माँ कसम, अरे मार दिया मैं। गैप हो गया क्या? Incendio. That's the mistake his colleague made, brother. Weapon कौन सा है? Weapon देखना तुमको, weapon कौन सा है अभी दिखाते तुमको। ये देखो, एल्डरवुड फीनिक्स फेदर, और ये हैंडल के साथ एल्डरवुड वॉन्ड है भाई। एल्डर वॉन्ड बोले तो एल्डर वॉन्ड। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि मेरे पास हीलिंग पोशन है नहीं।
कुछ तो है यहाँ पे, पता नहीं जो भी है। इसको टपकाते हैं पहले। डार्क मॉन्ग्रेल जो भी है। आ भाई आ, जल्दी आ, जल्दी आ। कम यार। Incendio. तीन कर लिया। चलो ये तो हो गया। Revelio. Who lived here, I wonder? और 2 बार कर रहे हैं। एनिमीज नहीं मिल रहे, लेकिन एनिमीज नहीं मिल रहे भाई, एनिमीज। फक फक। Let's get this over with, shall we? I have things to do. Expulso! Incendio. Expulsendio! Ah, well, here's how I see it. One can only blame oneself if one's belly is caught with a rumble. You can't expect us all to follow you around with fresh baked potatoes in our palms now, can ya? I don't waste time seeing if they're dead. Their fate's not on my hands. Only their... Protego! Incendio! What is happening? You will not survive this fight! Levioso. Accio. Incendio. And no one to share in my victory. Incendio. Incendio. ये क्या है? Incendio. Levioso. होमा है डंडों का। हाँ भाई होमा है डंडों का। बात तो सही है। इसमें एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना भाई, लेकिन एक दूसरे का अभी तक आया नहीं है फीचर मल्टीप्लेयर। जब आएगा तो सही रहेगा। How nice to see you, my young friend. आजा आजा। Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. लेवल का था क्या भाई? मैंने देखा ही नहीं भाई कितने लेवल का था वो। 20 लेवल का था। जंप कर दिया मैं फाइट करने के लिए। ये तो भाई दिक्कत हो गया। साला डबल एनिमी डेंजर। कोऑप है क्या? नहीं रहे अभी, अभी तो नहीं है कोऑप। फिलहाल तो कोऑप नहीं है। अगर कोऑप आएगा भी ना तो GTA 5 जैसा आएगा। न्यू क्वेस्ट अवेलेबल। कूल, लेट्स सी कौन सा क्वेस्ट अवेलेबल है भाई। बहुत दिक्कत है भाई। मेरे को एनिमी तोड़ना पड़ेगा, लेकिन एनिमी तोड़ने के लिए What are you up to now?
20 लेवल नहीं पाएगा। 20 लेवल तो हो नहीं पाएगा भाई। हाँ देखना पड़ेगा कितना लेवल का ये लोग। Levioso! Accio! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Protego! मेरा वन बोल रहा है नहीं जाना, लेकिन मैं पता नहीं क्यों जा रहा हूँ। और अंदर क्या मस्त जगह है लेकिन भाई, फॉरबिडन फॉरेस्ट। थोड़ा ब्लर लग रहा है मेरे को, ब्लरी ब्लरी लग रहा है, तभी लग रहा है। अब सही दिख रहा है भाई, अब सेक्सी दिख रहा है बहुत। यहाँ पे क्या है? अरे 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 Levioso! Accio! क्या मस्त चीज है भाई। छोटू लोग निकलते हैं यहाँ से। हाय जोनी भाई, हेलो हेलो हेलो। वैसे ये लैग हुआ क्या? जस्ट लैग ब्रो, लैग की बात कर रहा है भाई। राशु भाई का पीसी में अटक रहा है भाई गेम, समझ रहा है तू? राशु भाई का पीसी में गेम अटक रहा है, मेरे में चल रहा है, स्ट्रीम हो रहा है, वही बड़ी बात है। मेरे को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे 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 दौड़ रहे कैसे देखो। ओके मेरे को बस डॉज करना है। मेरे को ना डॉज का ना भाई, डॉज का ना मेरे को कंट्रोल चेंज करना डॉज का। मेरे से कंट्रोल की दबाया नहीं जाता सही से। अब सही है भाई, अब सही है। अटैक करते करते डॉज हो जाएगा मस्त। Levioso! Accio! Incendio! अटैक करना भूल गई। भाग भाग दूसरे के भाग,
That was hard. भाई ये क्या बोल के भाग गया भाई? लॉर्ड पुनीत कौन है भाई? Who is Lord Puneet? I don't know. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Okay. Incendio. Oh, never mind. Revelio. Incendio. Revelio. ये किया तो मैंने. Incendio. करना क्या है? क्या बकचोदी है ये? Revelio. Oh, I see. Okay, okay, cool, cool. Incendio. अरे भाई चलो. नहीं, बाद में करेंगे. वैलेंटाइन कैसा गया? गेम खेल रहा था, यही वाला गेम. अच्छा अच्छा, ठीक है, कर देंगे, कर लेंगे, बाद में करेंगे. भाई मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा ब्रो. इंडोनेशियन में जो भी तुम बोल रहे हो, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. बस ये लेवल 20 नहीं होने चाहिए भाई. है भाई 20. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. और 2 बार करना है भाई, बस मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा. Yes. Nice. Now fuck you. Levioso. Accio. Come here, Incendio. I'm a pro. लेवल 10 में होके लेवल 20 पेल रहा हूँ मैं बैठ के. Incendio. Allow.
Leviosa, you can do better than... Incendio. Incendio. Confringo. No, you can't. Confringo. नहीं यार ये तो डेंजर है भाई, ये तो डेंजर है भाई। पीवीपी आ सकता है गेम में, हाँ मतलब आ सकता है वैसे। देखो अब कुछ बोला नहीं जाता भाई, अभी तो 10 तारीख को ही लॉन्च हुआ है गेम, है ना भाई? ये तो 10 तारीख को ही लॉन्च हुआ है ना। Reduction. Incendio. Confringo. I take your life. Confringo. Everyone gets lucky now and then. देख रहे हो सेंटोर्स लोग को? डैम दैट इज नाइस, नाइस बॉडी। चलो चलो क्लास में चलो, क्लास चलते हैं भाई, क्लास करने का टाइम आ गया है। इट इज टाइम फॉर अस टू डू द क्लास। जाम क्लासरूम, डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स। क्लास करने का टाइम आ गया, चलो भाई। 4 बजे हैं, 5-6 बहुत टाइम है आज तो, आराम से गेम खेलूंगा। If only a new student would help me. I hope you were able to take care of everything I had asked you. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. तो इसको कहाँ रख सकते हैं अपन? Leviosa, Accio, Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick. Expelliarmus may save your life one day. चलो ये तो हो गया। अब मेरे पास क्या है क्वेस्ट में, देखते हैं क्या है।
अरे 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 अरे, ये सनग्लासेस पहना है भाई। भाई ये सही है भाई, मैं ये पहनेगा। नाइस भाई, ये पहन के रखेगा। सही है भाई, कूल, वेरी कूल। बीस्ट क्लासरूम, आई थिंक बीस्ट क्लासरूम में वो देगा, पता नहीं, देखते हैं। बीस्टी बीस्टी देगा मे बी, पता नहीं, लेट्स सी क्या कराएगा बीस्ट क्लासरूम में। इंटरेस्टिंग है भाई बहुत। ओके, अबे क्लासरूम तो आ गया, लेकिन I've always said that travel broadens the mind. बोला कौन ये? पढ़ाई नहीं करनी है भाई, स्टूडेंट खुद आया पढ़ने, टीचर ही नहीं पढ़ा रही है। कूल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओ स्टाइल मार रहा है, देखो भाई लौंडे, नाइस। ओ नाइस, लौंडे का स्टाइल देखो भाई। Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus. चलो मेन क्वेस्ट ही कर लेते हैं फिर, अगर नहीं करना है तो। उड़ना है कब, उड़ने का कब मिलेगा? मैं वही सोच रहा भाई, कब मिलेगा उड़ने का, मैं तब से खेल रहा हूँ, मिल नहीं रहा है भाई। नो असाइनमेंट्स, नो रिलेशनशिप क्वेस्ट, साइड क्वेस्ट 2 तो है कंप्लीटेड, ये सब है, ठीक है। आउट पोस्ट मैप, ठीक है। मेरे को जाना कहाँ है वैसे? मेरे को यहाँ जाना है, चलो चलते हैं। उड़ने का भाई मिल जाए इसको बंद कर दूंगा गेम, कल खेलूंगा, छुट्टी लूंगा और छुट्टी लेके खेलूंगा भाई। स्ट्रीम नहीं करूंगा क्योंकि स्ट्रीम में तो व्यूज नहीं आते। देखता हूँ, मैं मे बी स्ट्रीम ही कर लूँ, डोंट नो अबाउट दैट। एक सेकेंड, Revelio. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. चश्मा वाला I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me.
I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Revelio. Intramuros. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. That was nice. I like it. Oh भाई level 11 में cool, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे. ओह नाइस, ये सूट मिल जाएगा और एक स्पाइडर को डिफीट करने से. करेंगे. और एक स्पाइडर को डिफीट करना पड़ेगा सूट के लिए, आर्मर के लिए. कर लेंगे.
Okay, let's go. Let's see. मेरे एक लोग को कोविड हो गया अभी, लाइक अभी के टाइम पे भी हो रहा है। डैम भाई, डेंजर है भाई। ओके, नहीं एग्जिट नहीं करना। I wonder how big this place is. Levioso! Incendio! Levioso! I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light full screen so it's gone out on me. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio. Levioso. Accio. Protego. Protego. Expelliarmus. हीलिंग पोशन चाहिए भाई, बिना हील के जाना इस नॉनसेंस। शादी में बुलाया नहीं तूने भाई, कौन किस, व्हाट द फक, व्हाट? Levioso. Incendio. Accio. Protego. Expelliarmus. भाई, that was fucking intense, bro.
Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Potato. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. Fuck you. Levioso. Accio. Incendio. इतना गंदा फ्रेम कैसे ड्रॉप हुआ भाई? How the fuck? तो नहीं होना चाहिए। भाई टेम्परेचर तो एकदम आग लगा रहा है भाई। That is fucking intense, bro. No wonder throttle हुआ। फैन तेज करना पड़ेगा लैपटॉप का। तो ही मैं सोचूं। सही चीज मिल गया मेरे को। Damn, this looks good. बट ये सूट नहीं कर रहा भाई मेरे कपड़ों के साथ। Nope. स्किन चढ़ाना पड़ेगा इसके ऊपर। CPU हॉट भाई, बहुत हॉट। अच्छा मेरे पास वो आ गया होगा तो मैं तो भूल ही गया था। Knight in shining armor, बेंचोद। भाई साहब डेंजर है भाई। भाई ये यूज करेंगे भाई। तेरी ओ भाई Perhaps the next symbol is hidden somewhere. कितना का टेम्परेचर? 92 भाई। नहीं यार खोल ना। The fuck?
behind the rock. उछला क्यों भाई? नीचे से जाना था तो। अबे यार और नहीं अच्छा लग रहा है भाई। और Revelio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. वहाँ पे कुछ है। It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Levioso. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Revelio. Accio. Incendio. Revelio. भाई साहब, ये देखो भाई देखो। भाग भाग वहीं पे। Revelio. कुछ है यहाँ पे मतलब लेने लायक? Incendio. Protego. Levioso. Accio. Protego. Levioso. Accio. Incendio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Incendio. Never mind. कौन सा लैपटॉप है आरुजी? मैं नेट गया था बोल। कौन सा लैपटॉप है? आरुजी है भाई। Revelio.
Accio. Expelliarmus. Protego. Protego. Accio. Incendio. Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Revelio. An untouched chest. Jaredor wasn't very thorough in his search of this cave. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Revelio. Revelio. Accio. भाई जाना कैसे है? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Gear are full? What the fuck? Seriously?
यार फुल हो गया तो खराब है भाई। सही है। 11 हुआ नहीं है क्या अभी? थोड़ा बाकी है। Revelio. डार्क स्किन ज्यादा है, डार्क स्किन ज्यादा है। हाँ क्यों डार्क पैक है भाई, डार्क स्किन तो हो गई। डार्क आर्ट्स वाला पैक। रुक 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 रुक। An untouched chest. Jaredor wasn't very thorough in his search of this cave. Nice. और कुछ और कुछ और कुछ। अच्छा यहाँ पे तो आए ना अपने। चलो हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। काम कर लेते अपना वाला, इसके लिए आए थे अब। There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't go badly with the jacket. Potato! There's a victory that came none too soon. Wow. Yeah, right.
imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. भाई 1 HP में कर रहा है भाई मैं 1 HP clutch. Damn, that was intense, bro. That was Revelio. fucking intense. Long time no see. Remember? Yes, indeed. Dead shot. Long time. और एक किधर है? Revelio. I need to look around for the symbol. नीचे है. फिर से लड़ाई करनी पड़ेगी भाई. पोशन भी नहीं है यार मेरे पास. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself with this. ओहो भाई रे. देखते हैं. I believe मेरे पास हाँ सब तो है. 25 लेकिन इसके लिए लेवल 12 चाहिए. कोई बात नहीं, अब ये लगा लेंगे. चलो ये तो हो गया. और कुछ नहीं चाहिए ना. सब कुछ तो है. फिर 61 डिफेंस, ऑफेंस 47. ऑफेंस ज्यादा करना पड़ेगा भाई. ऑफेंस कम है मेरे पास. डिफेंस ठीक ठाक है. गेंशिन छोड़ दिया भाई. एक दिन मैं गेंशिन छोड़ के कुछ खेलता हूँ तो गेंशिन छोड़ दिया कौन बोलता है? नहीं गेंशिन तो मैं खेलता हूँ, रोज खेलता हूँ. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. I think we meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. We meet again. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Fuck.
Incendio. Revelio. What? That's unnerving. Okay. What's happening? चलो भाई 17 को 3.5 की लाइव स्ट्रीम है करूँगे यस करूँगा अभी ये मिको मेन हाँ भाई अभी ये मिको मेन obviously मिको always in the main party करना क्या है I think अंदर जाना है मैं कितना बड़ा क्वेस्ट है भाई Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. बोल भाई क्या हो गया What is this place? भाई यहाँ पे फिर फाइट होगा मेरे को पता है देख के लग रहा फाइट होगा भाई Can it be? No, नहीं होगा cool no fight It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Nice, okay.
नो अवतार भाई, अवतार लगाऊंगा ना मेरा पीसी ना नाचेगा मेरे सामने, ठीक है, नंगा होके। ठीक है, तो अवतार तो भाई रहने देते हैं अभी, क्या अभी देखते हैं। Incendio. Damn, this is nice. Revelio. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. That was quite cool. That was quite cool. जोनी सस्ता वोल्डेमॉर्ट, ठीक है भाई। वोल्डेमॉर्ट तो पैदा भी नहीं हुआ भाई, ये तो वोल्डेमॉर्ट का बाप है। अभी तो भाई डम्बलडोर भी पैदा नहीं हुआ है इस गेम का टाइम में। डम्बलडोर भी छोटू होगा मे बी। वोल्डेमॉर्ट दूर की बात है भाई। तो अपन है अभी वोल्डेमॉर्ट का बाप, समझ रहे हो? वोल्डेमॉर्ट का बाप है मैं। I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Handy resource indeed. अरे कैमरा, ये कहाँ पे आया मैं? वो चेस्ट है वहाँ पे, लेकिन ये चेस्ट देख लेगा मेरे को तो नहीं खुलेगा फिर। हाँ ये वाला चेस्ट है, देखेगा तो नहीं खुलेगा। यूटिलिटी के लिए ये यूज करूंगा मैं। एंड यहाँ पे सारी यूटिलिटी लगा देते हैं। बेस्ट बेस्ट भाई बेस्ट। और ये भी लगा देते हैं यूटिलिटी के लिए। F2 या ये वाला यूटिलिटी लगाएंगे और ये वाला अटैक के लिए, है ना भाई? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. क्या टास्क है भाई? बताओ मेरे को, बताओ मेरे को क्या टास्क है? मैंने मिस कर दिया, मैंने स्टोरी मिस कर दिया क्या? कौन सा स्टोरी, किस बात का स्टोरी भाई? फेंको इसको। फ्लाइंग क्लास, ओह आ गया भाई, आ गया भाई, नाइस। लेट्स गो, गो टू फ्लाइंग क्लास। ऑब्वियसली भाई मैं इसी का तो वेट कर रहा था, फ्लाइंग क्लास के लिए तो वेट कर रहा था भाई मैं। लेट्स गो। रात को होगा? फक सीरियसली?
चलो भाई, दिस गेम नो स्टोरी। अच्छा ये हाँ है ना भाई, स्टोरी तो है ही, पूरा फुल स्टोरी मोड है। Everybody grab a broom and we shall get started. हाँ मतलब काफी मिस कर दिया वैसे तो, अभी तो 6% ऑफ द स्टोरी हो चुका है मेरा। Mr. Cropton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Okay. अब एक बात बताओ, ये लोग डंडा में बैठता है, इनका लगता नहीं है गार्ड में? Now, your turn. ये सीट वीट लगाता, एक छोटा सा सीट लगा देता साइकिल का भी हो, मतलब साइकिल का सीट जैसा, तो मतलब फिर भी थोड़ा बचा रहता है ना भाई। लगता नहीं, चश्मा लगाया क्लास में डॉन लॉल। हाँ भाई डॉन। So there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. भाई मैं तो नहीं बैठता भाई, मैं तो सीट लगा के बैठता। And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Nice. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. नीचे से जाता सकता है। भाई इससे नीचे जाता है। This is brilliant. I think I'm getting the hang of this. फिर कंट्रोल है भाई, मेरे से कंट्रोल Well नहीं done. जाता सही से। Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. गाना कहाँ है? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. क्यों से क्या होता है? What if I change the settings? शिफ्ट से ऊपर जाता है ना, स्पीड जाता है शिफ्ट। ठीक है, कूल आई गेस। What if भाई कितना सेटिंग्स है? What if मैं यहाँ पे ब्रूम का सेटिंग्स कहाँ है भाई? नॉस्टैल्जिया तो है भाई। मेरी वॉइस नहीं आ रही, क्या होगा भाई वॉइस सुन के? रुको यार थोड़ा।
बूस्ट चार्ज ये तो ठीक है. माउंट ये तो माउंट है, ठीक है. ऑन फुट कॉमन माउंट्स का आई थिंक यही है. फ्लाई अप और फ्लाई डाउन का कंट्रोल है ना. ठीक है, चलो भाई हो गया. मस्त सा सेटिंग लगाया है मैंने. अब देखते हैं. ठीक है, माउस स्क्रॉल में नीचे ऊपर जाएगा. मैं इतना लेजी हूँ मैं. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? भाई झाड़ू खुल गया भाई. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? रुकता नहीं है क्या भाई? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Speed is the ground. Damn, that looks good. That's Kragawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. That's what Mr. Clopton, I made in Ohio I'm games. disappointed in you. Why? You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But Professor, enough. Class is finished for the day. As for you,
You do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. जरा 3 बार मरने से बचा है ठोक ठाक के बोलते rather good flying ठीक है भाई कुछ भी Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were आज worth कब it. तक करोगे स्ट्रीम और थोड़ी देर तक 6 बजे तक It was worth losing a few 6 house बजे तक points for करूंगा that फिर detour. निकलना है मेरे को बाहर You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. चलो भाई I'll keep an eye let's out go for and you in buy the a sky. broom then 1000 रुपए मेरे पास सब उड़ा देगा झाड़ू के पीछे चलो अच्छा मेरा कुछ तो खुला है क्वेस्ट जाके देखना पड़ेगा मेरे को या इन्वेंटरी या फिर चैलेंजेस आई बिलीव चैलेंजेस में खुला है ये क्या है? The fuck? What is this? Room of requirement. Room of requirement कहाँ है भाई? है ही नहीं मेरे पास room of requirement. निकालना पड़ेगा room of requirement वगैरह कुछ. चलो चलो चलो. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. ये तो ठीक है लेकिन मेरे को वो चाहिए ब्रूम चाहिए. I require assistance with a delivery and thought you सुन लेते पहले. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. ठीक है. Cool. अब हमको जाना कहाँ बोला भाई बंदा तो जाना कहाँ है झाड़ू खरीदना है मेरे को लेकिन झाड़ू मिलेगा कहाँ पे झाड़ू कहाँ मिलेगा भाई Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, नहीं भाई नहीं away बनाया from बेटे prying eyes and distractions. ऐसा नहीं कैसा मैं सही हूँ भाई The power of direct coming in 5th year हाँ भाई वो तो है भाई अब ब्रूम नहीं मिला प्रोसेस अबे व्हाट है ना मेरे पास और क्या चाहिए तुमको
Learn a course with Sebastian. Meet Professor Weasley in the 7th floor corridor. अच्छा ये क्या भाई? Conjuring spell. The room of requirement. ये रहा room of requirement वाला. कर लें क्या? आधा घंटे में हो जाएगा क्या? क्या बोलते हो? Rewards में कॉन्फिंगो है क्या? फ्रिंगो. अच्छा है ये भी. But I need this one more. चलो ये लगा करते हैं. मतलब झाड़ू खुला नहीं है भाई. Cool I guess. चलो स्कूल में चलते हैं और क्या फिर. इनविजिबल मैन. अब मैं लड़कियों का बाथरूम में जाएगा. नेवर माइंड. नहीं जाएगा मैं. जाना का है भाई. यहाँ जाना है. ओके कूल. चलो बुली करके बच्चों से छीन लो. अब भाई है ही नहीं बच्चों के पास. लाइट जला के जाएगा भाई. ओ यही जाना है. कूल. कितना ऊपर है भाई? कितना दूर है? Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? दे भाई दे. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. ये तो हो गया. ये भी हो गया. Revelio. Off on another adventure, are we? ये मेरे को पता है. चलो देखते हैं. हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है. यहाँ पे 4 और यूनिकॉर्न. 1 2 2 6. क्रैब चाहिए यहाँ पे मेरे को. ठीक है ये वाला. ओके तो ये वाला देखते हैं फिर.
3 और 0, 0 मतलब उल्लू और 3 मतलब 1 2 0 1 2 3 हाइड्रा। ओके या फिर 2 चाहिए मेरे को। नहीं यार 2 चाहिए 0 1 2। मुझे 4 और 0 1 5 मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा 7। हट यार थोड़ा हट, इतना दिमाग नहीं मेरे में। करना क्या है? Revelio. Miles has taught me everything I needed to know about Hogwarts before I stepped foot in the castle. ये रही, ये आई थिंक प्रोफेसर वीजली है ये। Going to harvest some knot grass from the greenhouse today. एक सेकंड। Levioso. Oh नहीं यार। Lumos. My entire family's been sorted into Hufflepuff, except for me, that is. Accio. Big sense. We've had to rely on each other. Levioso. शुरू हो गया। Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. क्या है भाई ये? Room of requirement. That's nice. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own.
While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. भाई तो बहुत सही था. Where in Merlin's name is that elf? Lumos. Is that... Revelio. Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. A to T. Damn. Revelio. वहाँ पे कुछ है? Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Okay, cool. Revelio. Revelio. Okay. Accio. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. What the fuck? गिर गई ले. फ्लश भी है भाई. क्या है यार? क्या मस्त रूम है भाई. ऐसा रूम मेरे पास होता तो मजा आ जाता. रूम से निकलता ही नहीं मैं. Damn, this is nice. स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक तो. Lumos.
How does anyone other than a house elf manage to get around in here? वो अलग बात है, हम तो वैसे भी रूम से नहीं निकलते। हाँ वही बात है, कई बात है भाई। What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. बाप लग रहा है भाई, स्टूडेंट तो लग I नहीं was a second है। चश्मों year. से पहन के We थे, discovered डेंजर। this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. Very plain.
चश्मा हटा देता हूँ भाई, बिना चश्मे के ही सही है भाई। ये हो गया। पहुंचा सा, तो आगे 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 आगे। Will be an invaluable resource. इसको सेव कर लेते पहले बार। I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. ले लेना The भाई, magic अब of तो एम्प्रेस भी creating क्रैक or करने वाली है conjuring तुमको। objects. I'll teach you. You know, क्या करना है ना? Conjuring spell, conjuring डराना है क्या? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Okay. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. लेकिन करना क्या है? Okay. ये है ना? दो करके क्या करूंगा भाई? ये अच्छा है भाई।
You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Okay, cool, I guess. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. ये बनाएंगे पोशन का। ओहो नहीं है मेरे पास ये वाला लीव्स नहीं है मेरे पास। बोटानी वाला हो जाएंगे। आई थिंक ये वाला बोटानी वाला है ना। यही करना था आई थिंक। हाँ ये निकालना था। निकाल लेंगे। Brew कर लेंगे मुश्किल में। I'm ready for the next lesson. Very well. You can acquire it by vanishing items here in the room. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Deke hasn't seen this many plants. I have the moonstone you requested, Professor. You can conjure more than potion. Conjuration can be used to decorate this space. Why don't you try it on the walls and floor? The fuck? Good work. Shall we move on?
seen this many plants here before. Nice. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. ये दूसरा spell है एक तो. Cool, I guess. Just aim your wand at any conjured item and perform altering spell to customize it. पूरा का पूरा floor में होगा भाई. Damn, nice. Deke hasn't seen... I have some questions about alteration, Professor. Yes? Thank you. I'll be here if you... चलो भाई सब हो गया. Alter the style of an item. ठीक है कर लेंगे. Alter the size of an item. अब size कहाँ से change करूँगा? Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Deke cannot believe how many beasts you have here. पता नहीं किसका चेयर है भाई ये. जिसका भी है. मस्त है भाई. हैग्रिड का चेयर है भाई.
चलो कलर चेंज कर लेते हैं। एक तो ग्रिफिंडोर का लग रहा है रेड, तो अपन ब्लैक करेंगे। Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. बालकनी किधर है? उस बालकनी ब्रो, ये बालकनी है। It warms my heart to see your interest in herbology, dare I say, blossom. Nice. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. सब हो गया भाई। आई थिंक मेरे पास ये तो हो गया। पोशन बनाएगा भी। लो भाई, Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. किधर है Deke? Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. अभी चेंज कर देगा पूरा का पूरा में नाइस भाई। अब लग रहा है ना भाई सेक्सी, एकदम स्लिदरिन टाइप रूम भाई। Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor.
The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room... अब ये क्या है भाई? दूसरा रूम खुल गया शायद. हाँ, दूसरा रूम. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. चलो ये तो हो गया भाई. अब निकलते हैं यहाँ से. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Okay, that is cool. सब कुछ हो चुका है. अब निकलते हैं. झाड़ू खरीद के निकलते हैं भाई. एक झाड़ू खरीदते हैं फिर निकलते हैं. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel and I've only just returned. Thankfully, with got a few rare U-weavers available, and Windwisps too. No matter what broom you... Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Let's see. What are we looking for today? सबसे महंगा वाला कौन सा भाई? 600 का सब सबका सब 600. What the fuck? Seriously? अच्छा कुछ नहीं है क्या भाई? Hogwarts house rune moon timber trimmer whatever Winwish light touch नहीं. अच्छा सा चाहिए भाई, एकदम सेक्सी सा. ये वाला लेंगे. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawas, you seem to be a flyer who might be interested in... Go on. Ha! Knew it!
But you may notice that speed consistency tends to falter. I have some ideas for enchantments. Upgrade. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can... As it happens, another Hogwarts student. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete, I could complete work on my first upgrade. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth... The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. सुंदर सुंदर खड़ू है भाई. अब देखते हैं कि झाड़ू तो है भाई मेरे पास. ओह डैम, क्या मस्त दिख रहा है भाई ये तो. दिख तो अच्छा रहा है भाई ये. दिख तो अच्छा रहा है. और एक लेंगे. लेट्स बाय वन मोर. You're back. Nice to see you again. नहीं यार, बाद में लेंगे. झाड़ू बुलाते कैसे हैं भाई? हाउ टू... छोड़ो, बाद में करेंगे. चलो ऐसे निकलता हूँ मैं, ठीक है? मेरे को निकलना है. बाद में करते हैं ये सब. ओके चलो गाइस, बाय 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 एवरीवन. जोनी रिमेंबर मी. हाँ डिऑक्सी रिमेंबर तो कर रहे हैं. चलो निकलते हैं.